Assalamualaikum. I'm Poonam and you are watching English Grammar Course Lecture 2 Noun Part 1 in मशवरा मुफ्त है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की ज़रूरत होती है। इसी तरह किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, बिल्ड करने के लिए उसकी ग्रामर की ज़रूरत होती है और ये ग्रामर इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट होती है। There are 8 parts of speech in English: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, article, conjunction, and interjection. Now let's start with noun. Anything in the world is called noun. It can be a person, animal, bird, insect, places, or things. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी शख्स, जगह, चीज, जानवर, कोई भी जज्बा या कोई भी आइडिया हो, सबको नाउन कहते हैं। नाउन की बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। हम जानते हैं कि तमाम चीजें नाउन होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें जिनकी पहचान नहीं होती वो कॉमन होती हैं। क्लास में इतने सारे बच्चों में बैठे हुए लड़के और लड़कियां, लेकिन हम अगर किसी मखसूस बच्चे को बुलाना चाहें और कहें ऐ बच्चे, सारे बच्चे अलर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब हम किसी खास बच्चे अली को बुलाएंगे, अली, तो सिर्फ अली ही अलर्ट होगा या अटेंटिव होगा या स्पीक करेगा, आंसर करेगा। You need to look at other examples, just as this is a man, this is a country, this is a cat, this is a man, this is a tree, a book, a cat. A common noun is a general word without any name. Man is a common noun because it has no name. A tree is also a general noun because it not tells which tree it is. Same is the case with a book and a cat. Now let's give them names. This is a man, he is Ali. This is a tree, it is an apple tree. When a specific name is given to a person, place or thing, it is become proper noun. When a man is given a name, it's become an individual, just like I and you. In the same way, when a tree is given a name, it's become a specific tree. And a book, when it is common, don't know what book it is. But when it's given a name, everyone knows what it is mean. बच्चे घर में बिल्ली भी पाले तो वो उसको उनके नामों से पुकारते हैं, जस्ट एज रानी, कम हियर, रानी इधर आओ, etc. So we have learned that things without names are common nouns, but with the special names, things are proper nouns. Let's make sentences out of it. This is a book. This is an English book. आप लोगों ने देखा बुक का बी, कैट का सी, ट्री एंड मैन सबके लेटर्स स्मॉल हैं, जबकि इनके नामों के लेटर्स कैपिटल हैं। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जितने भी कॉमन नाउन्स हैं वो सारे स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन के हमेशा कैपिटल लेटर्स होते हैं। They always take capital letters even when they are not
at the start of the sentence. आपने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि सेंटेंस के मिड में भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कैपिटल लेटर्स होते हैं। वो वर्ड्स प्रॉपर नाउन के होते हैं, जैसे कि इंग्लिश का ई हो गया। लेकिन कॉमन नाउन्स के स्टार्टिंग लेटर सिर्फ उस वक्त आएंगे कैपिटल, जब तक वो किसी जुमले के स्टार्ट में ना हो या फिर वो किसी टाइटल का हिस्सा ना हो, अदरवाइज ये नहीं आएंगे। तो चले कॉमन वर्सेस स्पेशल लेटर्स को ऑब्जर्व करते हैं। When we talk about a day, it is a common noun. But when we talk about a days of the week, it is proper noun because it takes capital letters. Day takes small letter, but a specific day takes capital letter. इसी तरह मंथ एक कॉमन नाउन है और उसके स्टार्ट में पहला वर्ड स्मॉल होगा। लेकिन अगर हम किसी स्पेसिफिक महीने की बात करें, जैसे कि जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, तब हमने उसके साथ कैपिटल लेटर लगाना है। लैंग्वेजेस के साथ भी हमेशा कैपिटल लेटर ही लगता है। कैपिटल लेटर्स, द नेम ऑफ सिटीज, कंट्रीज, days, months, festivals, books, newspapers, universities, schools, companies, restaurants, all are starting with small letters. Common names don't need capital letters, whereas proper noun always need capital letters even when they are not at the start of the sentence. प्रॉपर और कॉमन नाउन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। Now it's activity time. अब आप लोगों ने करना ये है कि कोई भी बुक या कोई भी पेज ओपन करें और उसमें से आप कॉमन और प्रॉपर नाउन्स को आइडेंटिफाई करें। यू विल बी थिंकिंग कि हम क्या बच्चों वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर ये है कि कोई भी सीढ़ी चढ़ने से पहले हम लोग उसके स्टार्ट से शुरू करते हैं। कभी भी हम डायरेक्ट चौथी सीढ़ी या 10वीं सीढ़ी पे नहीं आ जाते। So let's learn about singular and plural nouns. A single thing is called singular noun, that is a marker, whereas more than one things are plural noun and it is expressed by s. Pencil, pencils. पेंसिल के साथ s जोड़ देने से ये पेंसिल्स बन जाती हैं। So is the case with other things. Burger, burgers. Fry, fries. Egg, eggs. Salad, salads. Apple, apples. Bun, buns. Sandwich, sandwiches. Now let's talk about concrete noun versus abstract noun. What are concrete nouns and what are abstract nouns? All common noun are called concrete noun. इसका मतलब ये हुआ कि all the things that we can carry, that we can see, that occupy place are called concrete nouns. इसी तरह ऐसी चीजें जिनको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, बल्कि उनको जस्ट फील कर सकते हैं, और जैसे कि हवा, या उनके बारे में सोच सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, गुर्बत। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये दुख बैठा हुआ है? नहीं। इसी तरह जितने भी हमारे जज्बात हैं, हैप्पीनेस हो गई, ग्रीफ हो गया, लेयर हो गया, खुशी हो गई, गमी, दुख, एवरी इमोशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह फ्रीडम है, लव है, एंगर, हंगर, फेलर, jealousy, weakness, all these are abstract noun. Honesty is the best policy. Honesty एक abstract noun है, क्योंकि इसको हम किसी की जहानत को हम मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कैरी नहीं कर सकते, ना ही उसको छू सकते हैं, ना ही हम उसकी ऑनेस्टी चुरा सकते हैं।
किसी की खूबी को चुराया नहीं जा सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी चीज है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। पॉलिसी इज द अनदर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन। मोहब्बत एक खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत हम किसी को दिखा नहीं सकते, हम उसको सिर्फ बता सकते हैं। All the things that we cannot show are abstract nouns. जिस तरह कॉमन नाउन्स को स्पेशल नेम दे देने से वो प्रॉपर नाउन बन जाते हैं, इसी तरह कॉमन नाउन्स के साथ कोई स्पेसिफिक वर्ड जोड़कर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। दो पर्सन्स के दरमियान फ्रेंडशिप होती है। These are friends. Bond between them is called friendship. Brother, brotherhood. Child, childhood. Friend, friendship. King, kingship. Leader, leadership. So, ship and hood are abstract syllables. Now you're thinking, what is syllable? ऐसा वर्ड का पार्ट जिसको हम सिंगल अटरेंस में बयान कर सकें syllable कहलाता है। जैसे कि शिप, हुड। ब्यूटीफुल में 3 syllables होते हैं, beautiful. Can you count these pencils? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. These are 10 pencils. The things that we can count are called countable nouns, and the things that we cannot count are called uncountable nouns. Apple can be counted, schools can be counted, pictures can be counted, but you cannot count sugar, वाटर। हम किसी को कह सकते हैं कि हमें 3 पानी दे दो, हमें उसको एक्सप्रेस करने के लिए कोई और वर्ड यूज करने पड़ेगा। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कॉमन वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एडवाइस, एडवाइस, क्या हम इसको उठा सकते हैं? नहीं। इसको देख सकते हैं? नहीं। एडवाइस को छू सकते हैं? नहीं। तो कौन सी कैटेगरी में ये फॉल करेगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्रेशन, assistance, beauty, all these 4 words are abstract noun. इसी तरह bravery, in which category it falls? Yes, abstract noun. Bread and butter, these can be eaten, these can be carried, these can be touched. All these words are common nouns. Equipment, साजो सामान। Failure, failure is an abstract noun. Now it's your turn. आप लोग कोई भी बुक खोलें और उसमें से ये वर्ड्स फाइंड आउट करें, कौन सा वर्ड कॉमन नाउन है और कौन सा प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट क्लास में हम कंपाउंड और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।